हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में अपन ने आर्टिकल 29 तक देखा था। आर्टिकल 32 देखना बाकी है। तो let us discuss about the article 32 of the Constitution of India. What article 32 says basically. So article 32 talks about right to remedies. So basically article 32 talks about right to constitutional remedies. What do we mean by remedies? Basically, you can basically on violation of, or you can say directly approach to Supreme Court by passing all judiciary, that is lower court, on violation of fundamental right. So if your fundamental right has been violated, then you can directly approach the Supreme Court by passing all the judiciary in India. So this has been mentioned under the Article 32 of the Constitution of India. Now, to approach this, basically, Article 32 says that you have the right to approach the Supreme Court directly on the violation of fundamental right. To approach the Supreme Court, मान लो आपका फंडामेंटल राइट वायोलेट हुआ, आपके पास राइट तो है कि आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, लेकिन किसी ने रास्ते में ही रोक लिया तो तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? तो टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। भाई आपके पास कोई रास्ते में बाधा तो नहीं आ रही है, मालूम चलो कोई रास्ते में लटका के चला गया ऊपर। टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32। This has been mentioned in Article 32 of the Constitution of India. Now, Supreme Court in its once judgment, Supreme Court also stated fundamental rights should not become prisoner of technicality. Therefore, person can approach Supreme Court even on by post. So basically you can approach the Supreme Court। मान लो आपके पास रास्ते में व्हीकल ही नहीं है, तब क्या करोगे? आपके पास जाने का पैसा ही नहीं है, तब क्या करोगे? आपके पास वहां तक पहुंचने की सुविधा ही नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाए। मान लो एक कोई व्यक्ति है जिसका फंडामेंटल राइट वॉलेट हुआ है और वो बैठा है केरला में, तो वो कैसे आएगा? तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट इन द हरी वे। So what can he do? So basically he can reach Supreme Court by the post. Nowadays he can also reach the Supreme Court by the through the online uh, facilities. So this has been mentioned under Article 32 of the Constitution of India. So how, let us suppose your fundamental right has been violated now, and you have approached the Supreme Court. Now what the Supreme Court will do, what's the power Supreme Court have if your fundamental right has been violated? Let us suppose there is a person who reached to Supreme Court on the ground of violation of fundamental right. Then what the Supreme Court, what the High Court will do? So for this, Supreme Court and High Court have the writ petition power. Now let us discuss about this writ of the High Court and the Supreme Court of the Constitution of India.
So now, what is the writ? So how basically how Supreme Court enforce, right? So it is basically by writ. What is writ? Writ is basically a type of order, a type of order issued by Supreme Court or High Court to enforce their order. So basically, what is writ? It is a type of order. You can say it is a enforcing order. So if it is issued by the Supreme Court or the High Court, then there is a document on which some provisions has been written, and if it goes to the any authority, then it should be enforceable. So that's the meaning of writ. Now, under Article 32, to issue the writ, Supreme Court got the power. So under Article 32, Supreme Court got the power to issue the writ petition. So under Article 32, Supreme Court have power to issue writ. Under Article 226, High Court have power to issue it. So basically remember one thing, only High Court and Supreme Court have the power to issue the writ. No other judiciary, no other quasi-judiciary, no other lower judiciary have the power to issue the writ petition. Only the Supreme Court under Article 32 of the Constitution of India and under Article 226, High Court have the power to issue the writ petition on the violation of fundamental right. Now, what is the differences between the High Court and Supreme Court writ petition power? So basically discuss once more, then we will discuss in detail. So differences between Supreme Court and High Court writ. So what is the differences? Basically, first difference is the source. What is the source? Article 32 gives the power, and if in this Article 226 gives the power. So Article 226 gives the power to the High Court to issue writ. Now under Article 32, Supreme Court have the power to issue writ. अरे सर इसमें आपने कौन सा तीर मार दिया? तीर मार दिया ये नहीं, तीर नहीं मार दिया भाई। सुप्रीम कोर्ट के पावर जो पावर है वो अंडर आर्टिकल 32 के तहत है। मतलब ये फंडामेंटल राइट है किसी भी व्यक्ति का कि भाई सुप्रीम कोर्ट को तो इन्फोर्स करना ही पड़ेगा, लेकिन हाई कोर्ट के पास जो रिट की पावर है वो 226 के अकॉर्डिंग है। मतलब ये फंडामेंटल राइट नहीं है इंडिविजुअल का। हाई कोर्ट में or may not issue the writ, but Supreme Court have to, must to, Supreme Court must to issue the writ on the violation of fundamental right. But High Court not have such power. High Court may or may not can issue the writ on the violation of fundamental right. That has been basically mean because the source of giving writ power to Supreme Court is under Article 32, which is again a fundamental right. So Supreme Court have to issue, but High Court may or may not. So this is the basically first difference between the High Court and Supreme Court power, writ petition power. Now, what is the another difference? The another difference is that High Court can issue writ only their jurisdiction area. भाई मान लो दिल्ली हाई कोर्ट है, अब दिल्ली हाई कोर्ट के पास जो जितनी भी जुरिस्डिक्शन की रीजन होगी कि भाई इस रीजन में दिल्ली हाई कोर्ट की ही जुडिशरी आएगी अंडर में, और मान लो इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास जितनी जुडिशरी आएगी, मान लो यूपी की जुडिशरी है, तो यूपी की रीजन में जो भी रिट पिटीशन पावर, जो भी रिट इशू करनी होगी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगी। दिल्ली में जो करनी होगी वो दिल्ली हाई कोर्ट करेगी। एमपी में जो करनी होगी वो एमपी हाई कोर्ट करेगी। झारखंड में जो करनी होगी वो झारखंड हाई कोर्ट करेगी। बिहार में जो करनी होगी बिहार हाई कोर्ट करेगी। तो हाई कोर्ट रिट पिटीशन पावर इशू करने केवल वो अपने रीजन में कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती कि भाई दिल्ली की हाई कोर्ट यूपी के लिए रिट पिटीशन इशू करे, या बिहार की हाई कोर्ट यूपी के लिए रिट पिटीशन इशू करे, या किसी और स्टेट की हाई कोर्ट किसी और स्टेट के लिए रिट पिटीशन इशू करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो हाई कोर्ट के पास रिट पिटीशन की पावर केवल और केवल उनके ज्यूरिसडिक्शन एरिया के लिए ही है, बल्कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट all across India. So that is the basically second difference between the High Court and High Court and Supreme Court petition power. And what is the third difference? So basically the third difference is that I have already discussed that High Court is not mandatory to issue writ. Why? Because Article 226 is not a fundamental right, but Supreme Court have to issue writ because Article 32 is a fundamental right. So that is the third difference between the writ High Court and Supreme Court writ petition power. Now there is a one another difference. What is the another difference? The another difference is that High Court have the power to issue the writ. High Court have power to issue writ on violation of fundamental right. Plus, they've also power to issue writ on some other matters as well. So for some also have the power for some other rights. क्लियर है बात? तो हाई कोर्ट के पास पावर है कि भाई एक तो वो आपको फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग रिट इशू कर सकते हैं, और अगर कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, कोई दूसरा राइट है जो आपका वायलेट हो रहा है, उसके लिए भी हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि भाई वो रिट पिटीशन को इशू कर सकते हैं। They have the authority, they have the power to issue the writ petition for the fundamental right and as well as for the others right also. But in the case of Supreme Court has only power to issue writ only matter on violation of fundamental right. So Supreme Court can issue writ on the violation of fundamental right. So that has been the third difference which has been mentioned under Article 32 of the Constitution of India. Now, if you read under Article 32 Clause 3, let us read once, then we will discuss in detail. Once read under Article 32 Clause 3 of the Constitution of India. What's the Article 32 Clause 3 says? Article 32 Clause 3, first read 32 Clause 2. The Supreme Court shall have the power to issue direction or orders, writ including writ in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto,
certiorari, where may be appropriate for the enforcement any of the right conferred by this part. So basically Article 32 we have discussed. Now Article 32 clause 2 states that Supreme Court have power to issue writ. Various writ has been mentioned, basically habeas corpus, mandamus, quo warranto, certiorari, and prohibition. So these are the various writ which has been given, uh, which has been assigned to Supreme Court to issue on the violation of fundamental right and for effective enforcement of law. That is, if violation of fundamental right. Now, under Article 32 Clause 3, let's read once. Article 32 Clause 3 states that without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court, by Clause 1 and Clause 2, Parliament may by law empower any court to exercise within the local limit on the jurisdiction. So basically, Article 32 Clause 3 states that भैया ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास तो पावर है ही रिट पिटीशन इशू करने की, लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे, सो पार्लियामेंट अगर चाहती है तो बाय लॉ बेसिकली दे हैव टू पास द लॉ. So parliament can give power. So basically it talks about of extension for issuing writ power. So basically Article 32 clause 3 states Parliament may by law can give power to lower judiciary or other judiciary to issue writ. So basically पार्लियामेंट चाहे तो ये पावर लोअर जुडिशरी को भी दे सकती है कि भाई आप रिट को इशू कर सकते हैं फॉर द इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ. So these are the basically difference which has been given in the Article 32 of the Constitution of India. So now let us discuss various writs of the Constitution of India. So what are the various writs? Let us discuss one by one each. Now, various writs. So we have already discussed that five writs has been mentioned in our Constitution under Article 32 of the Constitution of India. The first one is the habeas corpus. Habeas corpus. And what is the another one? Another one is the mandamus writ. And what is the another writ? Quo warranto. And what is the another one? Certiorari and prohibition. So these are the basically five writs which has been according to this power has been given to the Supreme Court to effective enforcement of the law. Now, what do we mean by habeas corpus? Writ of habeas corpus. So basically, habeas corpus is what is the mean of habeas corpus? So mean of habeas corpus is that to present
body before court। इसका सेम मतलब होता है कि भाई हॉबियस corpus का, कि भाई मेरे को कोर्ट के सामने किसी भी पर्सन की बॉडी लेके आओ, जिंदा हो या मुर्दा हो मेरे को नहीं ले लेना, मुझे उस व्यक्ति की बॉडी इस कोर्ट में चाहिए। क्या है इसका मतलब? अब मुर्दा लाओगे तो आगे बात है कि क्रिमिनल प्रोसीजर स्टार्ट होगा, लेकिन मेरे को बॉडी सामने चाहिए। व्हेन इट हैज बीन इशूड, व्हेन, तो ये इशू कब होती है? जब किसी पर्सन का इलीगल डिटेंशन हो जाता है। मान लो किसी ने, किसी व्यक्ति ने, मान लो कोई पर्सन है, मान लो हम ही है, तो हम ही कहीं के राजा बन जाए अपने क्षेत्र के, और हम किसी व्यक्ति को अपने अंडर में ले लें और उसको जाने ही ना दें, तो उस व्यक्ति के फैमिली वाले सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे कि भाई, वो फिर रिट को इशू करेंगे कि भाई जाओ और लेके जाओ और शर्मा जी को दो जाके, कि भाई ये जो है रिट लो सुप्रीम कोर्ट की और इस व्यक्ति को रिलीज करो। तो पहली बात तो माइंड में ये कर लो कि भाई इलीगल डिटेंशन चाहे पुलिस करे। अब मान लो पुलिस ने इलीगल डिटेंशन कर लिया, पुलिस ने किसी को अपने अंडर में कस्टडी में ले लिया, और वो कस्टडी में लेने के बाद हाई डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि होता है ना, पहले कस्टडी में लिया आता है, फिर विद इन 24 आवर मजिस्ट्रेट के सामने रिप्रेजेंट करना रहता है। तो मान लो पुलिस ने डिटेंशन तो कर लिया, लेकिन वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो अगेन ही हैव द पावर to approach the Supreme Court, or the and their relatives can also approach the Supreme Court on the violation of their fundamental right for to represent the body within the court. So when it has been issued, basically it has been issued if illegal detention by authority, किसी अथॉरिटी के द्वारा हो डिटेंशन, और बाय इंडिविजुअल। होते थे ना पहले, हमारा शासन चलेगा, तो वो लोग कर लेते लीगल डिटेंशन। सो बाय, इफ any illegal detention of any person has been happened by authority or by individual, and if petitioner, so basically if your illegal detention has been happened, then you can approach the Supreme Court, and if petitioner able to prove illegal detention, हाँ, तो भाई मान लो कि आपका इलीगल डिटेंशन हुआ, किसी अथॉरिटी ने किया या किसी पर्सन ने किया, और पेटिशनर, अब हमारा अगर इलीगल डिटेंशन हो गया, हमको पुलिस उठा ले गई, अब हम तो पहुंच नहीं पाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है भाई सर, आप नहीं पहुंच पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बिहाफ पे हमारे घर वाले पहुंच सकते हैं, हमारे मित्रगण पहुंच सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स पहुंच सकते हैं, कि भाई मेरे इस पर्टिकुलर व्यक्ति का इलीगल डिटेंशन हुआ है, किसी अथॉरिटी ने किया है, किसी पुलिस वाले ने किया है, किसी इंडिविजुअल ने किया है, और वो सुप्रीम कोर्ट ले जाए, और वो अगर पर्सन जो पिटिशनर है, जिसने पिटिशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो पिटिशनर प्रूव हो गया कि भाई हाँ इस व्यक्ति का रियल में इलीगल डिटेंशन हुआ है, तो तो अब या तो वो हाई कोर्ट पहुंचे या सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तो जनरली हाई कोर्ट पहुंचना प्रेफर रहता है, क्योंकि हाई कोर्ट बहुत पास पड़ती है ना, तो हर स्टेट में हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जाना है तो कोई केरला का अगर व्यक्ति है, तो उसको अगर पिटीशन फाइल करनी, तो पहले वो दिल्ली से, केरला से यहाँ आए, दिल्ली है, फिर वो पिटीशन फाइल के लिए, फिर वो प्राइमा फसाई प्रूफ करे कि हाँ भाई इसका इलीगल डिटेंशन हुआ है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसीलिए हाई कोर्ट अथॉराइज्ड की गई है कि भाई आप भी इस मैटर को इंटरटेन कर सकते हैं ना। सो इफ petitioner इज illegal detained, then if therefore
High Court or Supreme Court issue writ to present body before High Court or Supreme Court. So basically, then Supreme Court, High Court will issue the writ of habeas corpus to present the body before the High Court or the Supreme Court. If illegal detention happened, if illegal, then release it, then release that person. If not illegal, then it is okay. So basically, मान लो किसी पुलिस डिपार्टमेंट ने किसी व्यक्ति को डिटेन कर लिया, अब हो सकता है खुरापाती तो लोग होते ही है, पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, हमारे व्यक्ति का इलीगल डिटेंशन हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट ने रेट इशू कर दी, भाई ये हाई कोर्ट ने रेट इशू कर दी आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग कि भाई इस व्यक्ति को रिलीज करो। अब इस व्यक्ति को रिलीज तो करना है, मान लो डिटेंशन ही इलीगल नहीं था, वो लीगल था डिटेंशन। अब वो अगर लीगल डिटेंशन था तो इट इज ओके, इफ इट इज इलीगल डिटेंशन देन सुप्रीम कोर्ट विल से दैट must have to release that person right now. So that is the basically writ of habeas corpus. I think it will be clear. According to habeas corpus, Supreme Court and High Court can issue the writ for to present if illegal detention has been happened of any person by any authority or by any individual. So Supreme Court or High Court will issue the writ under Article 226, under Article 32 of writ of habeas corpus to present that person before the High Court or the Supreme Court. If detention is legal, then it is okay. If it is illegal, then High Court or Supreme Court will direct that authority or that person to release that person right now. So that is the basically writ of habeas corpus. As we have discussed also, what is there is a one principle, that is the principle of locus standi. Let us discuss once, then we will move on the second writ. So principle of locus standi. What is the principle of locus standi? Basically that is the principle, मान लो आपका illegal detention हुआ है, आप तो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते, तो on the behalf of you, you can send any other person. So others person can also approach the Supreme Court on the violation of others fundamental right. So basically, what do we mean by principle of locus standi? Only aggrieved person can approach Supreme Court or High Court. सो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टेंडाई कहता है कि भाई केवल जो एग्रीव्ड पर्सन जिसका डिटेंशन हुआ है वो ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंच सकता है। तो ये यार कहाँ की बात रही, हमारा डिटेंशन हुआ है और अगर हम एबल हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के लिए तो हम काहे का हमारा डिटेंशन हुआ है। सिंपल सी बात है, अगर हमारा डिटेंशन हुआ है और अगर हम फ्री हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के लिए तो घंटे का हमारा डिटेंशन हुआ है, तो डिटेंशन ही नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टेंडाई हॉबियस कर्पस पे नहीं लगती है। नाउ इट शुड बी क्लियर। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द रेट ऑफ mandamus. So what is the rate of mandamus? Basically, what is the basically means? Mandamus means we command. And when it has been issued, when it is issued by Supreme Court or High Court under Article 32 and under Article 226. So basically issued by court to public authority to perform
their legal duty because of their inaction others fundamental right violated. That is, this writ issued against legal this issued against legal office, that is executive authority. But this writ cannot be issued, but this writ cannot be issued against governor and president, and also and legislature. So basically, writ of mandamus, according to writ of mandamus, Supreme Court and High Court can issue a writ on non-performing their work by any authority, by any executive, by any public authority. So if any authority which is not performing their function, because of not performing their function, others' fundamental right has been violated, then सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बेसिकली अथॉरिटी तो होती है एग्जीक्यूटिव, सो जो एग्जीक्यूट करती है, सो देन सुप्रीम कोर्ट विल इशू द रिट फॉर द enforcement and tell to perform their duty. But remember one thing, this writ cannot be issued against the president and against the governor and against the legislature. Basically means, मान लो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो अपना वर्क कायदे से नहीं कर रहे हैं, और वो अपना वर्क कायदे से नहीं कर रहे हैं, उन अपना वर्क कायदे से बिकॉज दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर वर्क rightly, so that others fundamental right has been violated, then Supreme Court will issue the writ of mandamus. Let us suppose any department, any police department, they are not performing their work, so that others fundamental right has been violated, so Supreme Court will issue the writ of mandamus. Let us suppose one case, but this writ cannot be issued against the legislature, basically the parliament, against the state legislature. So Supreme Court cannot issue the writ against the legislature, against the against the governor, against the parliament, against the president for not performing their work. So four authority which has been got independent from the writ of mandamus: president, governor, legislature. These are the authorities which are independent from the writ of mandamus. Now let us discuss about what is the essential condition for issuing the writ of mandamus. भाई ऐसे तो नहीं आते हैं कि मुंह उठा के चले जाए और कह दिया भाई कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है इस अथॉरिटी के फंक्शन ना करने के, कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना. सो if only if it can be issued only if violation of fundamental right, or it can be issued only if non performing of statutory body
and also it can be issued only when refusal and demand and refusal has been happened. ऐसा है भाई कि ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जो रेट ऑफ मैंडेमस इशू होती है। कौन कौन सी तीन कंडीशन है? पहली कि आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो उसकी उस अथॉरिटी के ना परफॉर्म करने से, पहला। दूसरा क्या है कि भाई ये केवल और केवल स्टेचुरी बॉडी परफॉर्म नहीं कर रही है, तब आपका वायलेट हो रहा है फंडामेंटल राइट, देन इट कैन बी इशूड। थर्ड चीज क्या है कि भाई आप, ऐसा नहीं है कि भाई आप अथॉरिटी के पास गए ही नहीं, आप चले गए सीधा सुप्रीम कोर्ट कि भाई ये तो मेरा काम ही नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है, आप उस अथॉरिटी के पास गए, आपने डिमांड रखी और वहां से रिफ्यूज कर दिया गया कि भाई मैं आपका काम नहीं करूँ, देन यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं कि भाई साहब मैं अथॉरिटी के पास गया ही नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, चल भाई वहीं मिलते हैं तेरे से। ऐसा नहीं होगा। देयर शुड बी अ डिमांड बाय यू, देयर शुड बी अ रिफ्यूजल बाय देम, by the authority, then you can approach the Supreme Court. And one more thing, by the refusal, your fundamental rights should be violated. Then you can approach the Supreme Court. Then Supreme Court will issue the writ of mandamus for effective enforcement of their fundamental right. But this writ cannot be issued against the president, against the governor, against the legislature. Remember one thing. Now let us discuss about writ of quo warranto. What is the writ of quo warranto? Let us discuss once. No, writ of quo warranto. Basically, this writ is has been issued when user, basically what do we mean by Q warranto? Where is your warrant of your अपॉइंटमेंट? कब इशू होती है भाई? सिंपल भाषा में समझ लो कि भाई कोई भी एक व्यक्ति आया और वो कहने लगा कि भाई ये आज से मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूँ, या आज से मैं गवर्नर हूँ इस स्टेट का, या इस स्टेट का गवर्नर मैं आज से हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट कैन आस्क, where is your warrant? Who have authorized you? On which basis are you saying that you are the governor? Where is your appointment? Or if anyone say that I am the IPS officer, then Supreme Court or High Court can ask, where is your appointment letter? Give me. On which behalf, on which ground are you saying that you are an IPS officer, you are a governor, you are a president, you are a minister of any authority? Let us suppose if there is any minister who is not leaving their ministerial post even after he lost the majority, then Supreme Court can ask them, where is your appointment letter? Give me, because you are not in government, another government has been formed and you are not leaving the head of that authority. So government has appointed the new person. Why are you not leaving them? So give me the warrant on which behalf are you saying that you are the authorized person of that authority. So basically it is issued by a court, to examine
legality of the claim of a person through a public office. So basically, if this person is not able to prove, then Supreme Court, according to Q of Warrant 2, they can declare that person as unauthorized person, and then authorized person will be got the seat. Again, in this case, principle of locus standi will not apply. हाँ बताएं